So hello guys, welcome to this session of Vedantu. How are you all doing? Are you guys great? Doing great? Everything is fine? Tell me बच्चों जल्दी से. So hello Muhammad, hello Vishal, how are you? Fine. Yeah. So now we have started the session. Yes, unknown. Jharkhand is there. Jharkhand's paper is also there. So, bacho, this session is beneficial for both of you. Means those kids whose examinations have already been conducted, and for the students of those states whose examinations are going to be in the near days. ठीक है? तो ये दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है. राइट कृष्णा, आई विल कम टू त्रिपुरा ऑल्सो. आई विल बी कवरिंग ऑल द स्टेट्स. यू डोंट हैव टू वरी. ठीक है. त्रिपुरा का पेपर नहीं है यार एक्चुअली मेरे पास. आई डोंट हैव द पेपर ऑफ त्रिपुरा. राइट, सो दैट विल बी अपलोडेड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ऑन वी फाउंडेशन चैनल. तो वी फाउंडेशन चैनल पे कल से आने वाला है वो सारा टॉपिक्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई गेस देयर इज सम लैगिंग इन इट. नो, इट्स फाइन. Yes, Jharkhand 181 is a good score. So most probably you will qualify NTSE stage 1. So get ready for NTSE stage 2. Get ready for a thrill. ठीक है. तो आज का जो हमारा सेशन है, फर्स्ट आई लेट यू नो कि व्हाट इज इट अबाउट. सो बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग द पेपर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, झारखंड एज वेल एज छत्तीसगढ़. तो तीन स्टेट्स के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दीज थ्री स्टेट्स, बिकॉज द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी 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 अनकन्वेंशनल. ठीक है. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑल द स्टेट्स. तो ये बहुत अनकन्वेंशनल पेपर होता है. एक ये है रीजन उत्तर प्रदेश रखने का. ठीक है. आई हैव केप्ट द पेपर ऑफ झारखंड हियर बिकॉज द पेपर ऑफ झारखंड इज मोस्टली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी. राइट, सो दैट इज वाई झारखंड. एंड आई हैव केप्ट द पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ इन द सेशन ऑल्सो. छत्तीसगढ़ का पेपर आई हैव टेकन बिकॉज इट हैज एनसीईआरटी as well as the state board. So that is why the three papers have been taken. Right, Anu. UP 167, yeah, that is safe. Tripura, Tripura, Krishna, you will definitely do wonders if you are getting 145. So you'll pass with flying colors in Tripura NTS. You don't have to worry. Right. Tripura's cutoff is very low. It is almost equivalent to Bihar. MP में बच्चे at least you need 1670, right? 171. Yeah, no, that is fine. For EWS category, 170 is absolutely great in Madhya Pradesh. So you are also going to pass with flying colors. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स रखे हैं. ठीक है. दिस पेपर इज ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट. एंड आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज वेरी 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 अनकन्वेंशनल. ठीक है. एक बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप का पेपर था उत्तर प्रदेश का. हम सबने देखा है. एंड इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ दिस ईयर ओनली. एवरी ईयर द स्टोरी रिमेन्स द सेम. So the paper of Uttar Pradesh is always unconventional. Last year, the Uttar Pradesh NTSE had asked questions about Mahabharata and Ramayana. ठीक है. तो that is just simply out of the box. कुछ भी आ जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर. तो वैसे ही पहले हम उत्तर प्रदेश का पेपर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. सो बच्चों, द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज मोस्टली फोकस्ड ऑन जनरल नॉलेज दिस ईयर. Right, it was mostly focused on general knowledge, and some two or three questions came out of the current affairs also. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे दोस्तों जो करंट अफेयर से आए हुए थे. एंड दैट इज मींस वी कैन से दैट इट इज वेरी वेरी अनथिंकेबल कि एनटीएससी के अंदर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल एवरी ईयर. So you can never predict that what is going to come in your examination and what is not. Right. So I'll give you a quick brief introduction about the question paper. So the Uttar Pradesh question paper started with, it's not no unknown bacha. It's not like UPSC level. It is somewhat near to the SSC level. ठीक है. Staff Selection Commission होता है ना. Jharkhand 172. Bacha, Jharkhand 172 is your borderline, right? So you are on a borderline, Vishnu. Means you are not. I am not 100% sure कि मैं ये बोलूं कि ना बोलूं, but हाँ 100% I don't
I will not give you a false hope regarding it. ठीक है? So 172 is a borderline. You can be on this side also, you can be on this side also. तो आप दोनों साइड हो सकते हो. ठीक है? But if you are belong to a category like EWS or OBC category, then definitely you will pass. Hell, अच्छा विधि, okay okay sorry. Hello विधि. ध्रुव बिल्कुल याद हो भाई. ज्योति, हाँ एसएससी रेलवे, वही वही वही. And general. So Vidhi, you are at the border, right? Because the paper of Jharkhand was very, very easy in terms of SST. I don't have any idea about MAT and all, but yeah, the SST paper was extremely easy, and you would have scored 40 out of 40 very, very easily. Is 181 score is 100% on this side in general. Uh, Unknown here, 181 is a very good score, right? So 181 pe most probably you are going to qualify NTSE stage. But yeah, we cannot predict NTSE. Yeah, obviously, and Vidhi, one more thing, Vidhi, don't get means emotional. ऐसा मत होना, because this year the condition was very very different. So not everyone has had applied for the NTSE examination. So definitely the number of children who participated in the NTSE examination this year was less. Okay, so इससे there is a chance that the cutoff might get down, right? So ऐसी probability है इस बार in most of the states. But if I'll talk about the previous criteria, मतलब sorry, previous condition, अगर हम पुराने सारे condition को लेके देखते हैं 2016, 17, 18, 19, then the paper of this year was more easy as compared to the last year. हाँ भाई 28, वेरी गुड. चलो, so first what we'll do बच्चे, tell me in the chat box how many of you are having your examination in the next month or in the month of January. मीन्स कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ है एनटीएससी का. कमेंट बॉक्स में बताओ, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जल्दी से बता दो. हेलो पलक. पिक. Beta, the paper of Tamil Nadu we will be analyzing very soon, right? So in this week we have daily YouTube sessions on the V Foundation channel. तो उस पे हमारे daily YouTube sessions होने वाले हैं. At 8:30 I will come up with a new paper every day, right? So please go and subscribe that channel if you have not subscribed yet. Jharkhand, there is a paper of Jharkhand. I will discuss about that also. Just give me 5 minutes. First I'll discuss about the Uttar Pradesh paper. ठीक है? So I start preparing for NTSE stage 2. Yes, yes, definitely, definitely. And also, Vidhi, I also highly recommend you to start preparing for NTSE stage 2, because ultimately you have to prepare for your boards, right? So it's better if you'll start right now. I'm good, Palak. Good, Palak. Hmm. हर्ष चौधरी, मैं यही पढ़ा हूँ, यही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो. Haryana expected cutoff is 160 to 165 this year, according to me. Today we have Uttar Pradesh. Today we have Uttar Pradesh, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, 3 स्टेट्स के पेपर है. ठीक है. सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद उत्तर प्रदेश. सो बच्चों, आई हैव टोल्ड यू दैट द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज मोस्टली बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एज वेल एज करंट अफेयर्स. सो वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. सो आई विल टेल यू वन थिंग. इफ यू बिलोंग टू बिहार, राइट, इफ यू बिलोंग टू बिहार, आई एम फ्रॉम पटना, तो अगर आप बिहार से हो, देन गो थ्रू द पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश वंस. दैट इज हाईली रिकमेंडेड कि एक बार आप उत्तर प्रदेश के पेपर को जरूर देख लो. ठीक, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और देर इज अ वेरी मच सिमिलैरिटी, देर इज अ वेरी मच सिमिलैरिटी इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश. सो अगर हम उत्तर प्रदेश के पेपर की बात करें, सो यू कैन सी दैट आई गेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम हिस्ट्री. ठीक है. मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो हिस्ट्री से थे, एंड इकोनॉमिक्स वाज सिंपली इग्नोर्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ एनटीएससी. तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. एंड एवरी टाइम आई वाज टेलिंग यू गाइस कि डोंट फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, बिकॉज उत्तर प्रदेश से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे. जस्ट गो थ्रू 9th and 10th, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट.
तो 9th-10th की बुक पढ़ लो, इकोनॉमिक्स से नहीं आएगा पेपर, और सेम हुआ भी वैसे ही, इकोनॉमिक्स से पेपर नहीं आया। ठीक। यस बच्चा, यस काशी, इट्स यू हैव मेनी टाइम, यू हैव ऑल अराउंड 3 months राइट नाउ। वेरी गुड पलक। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि what happened this year. So we had thought that the Uttar Pradesh paper will be very unconventional, and that is what has happened. तो सेम हुआ भी वही चीज है। यू कैन सी द क्वेश्चंस, राइट, वेयर इज द सांची स्तूप सिचुएटेड, सो इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, यू विल नॉट गेट टू सी इट इन योर 9th, 8th और 10th क्लास बुक, राइट। सो बिल्कुल जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। विच रीजन डिड अशोका अडॉप्ट, दिस इज रिटन इन द 6th क्लास एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो 6th क्लास का टॉपिक है, that came in your examination. Which is the oldest language of South India? This is simply unconventional. You would not have even thought about it कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा था कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड इट इनकरेक्ट, राइट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिल। नेक्स्ट इज who among the following had introduced the market control policy? Mughal Empire, 7th class, right? Alauddin Khilji is the correct answer of this. So you can see, thank you, Dhruv. So I think I had taught many of these topics on YouTube. And who among the following founded the Vijayanagar Empire? That is completely class 6th, right? So it is highly recommended for the students of Bihar that they go through the paper of Uttar Pradesh, because that will be very 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 beneficial for you। खैर है जीतू भैया, 160 170 दिल्ली में हो जाएगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज बिल्ट बाय अकबर? यस अनन्या, 161 इज गुड। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूं, आप पहले ध्यान दो उसके ऊपर। ठीक है, इन विच ईयर वास्को ड गामा केम टू इंडिया? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब? Who founded the Indian National Congress? Right. So this is the only question which is in there in your 10th क्लास book. टिल नाउ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके 10th क्लास की बुक में होगा। हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सिंपल, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, और कोई रिलेशन ही नहीं है इसका जो हम पढ़ रहे हैं उससे। ठीक। मनरेगा वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर? नाउ दिस क्वेश्चन इज इन योर बुक, राइट। सो ये एक क्वेश्चन आया दैट केम फ्रॉम योर बुक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? हैव यू एवर थॉट कि ये भी क्वेश्चन आएगा? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड लोकेटेड? नो वन हैज एवर इमेजिन्ड कि ऐसे क्वेश्चंस भी एनटीएससी में आ सकते हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल good level question. This was not at all a good level question paper. So according to me, the question paper of Uttar Pradesh was moderately tough, right? Moderately tough. There are 5 to 6 questions were there in this paper. I think most of the students have marked it incorrectly. बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक या दो तुक्का लगा होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों से मैंने पूछा कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या टिक करके आए हो? दार्जिलिंग, बिकॉज दे नोट दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा चाय होती है, बट द करेक्ट आंसर इज कोलकाता, राइट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब ये भी बहुत बहुत ही अनकन्वेंशनल है भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका आंसर होगा मुंबई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही गलत थे, जिनका हमने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि ऐसे क्वेश्चंस भी ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, एंड गेट रेडी फॉर द बिहार स्टेट वाले बच्चों भी, क्योंकि वहां भी यही आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक। हाँ बच्चे, कृष्णा, यू विल क्लियर द कट ऑफ। सो अकॉर्डिंग टू मी, the good score for Uttar Pradesh in social studies, the excellent score is 35. If you are above 35, you have done excellent. Excellent performance है अगर आपका 35 मार्क्स है। ठीक है, इफ यू आर अबव 30, यू हैव ऑल्सो डन वेरी गुड, राइट। सो 30 मार्क्स प्लस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर मी, राइट। बट इफ यू आर बिलो 25, देन देर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप 25 से नीचे हो तो भाई दिक्कत की बात है। ठीक। टोटल स्कोर में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, सो इफ यू आर अबव 160,
then most probably you have cleared the NTSE stage 1 from your side. ठीक है, अगर आपने 160 स्कोर किया है तो आपके साइड से ये बहुत अच्छा स्कोर है एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर NTSE स्टेज 2. ठीक है, विष्णु, इफ यू आर 28 यू हैव ऑल्सो डन गुड. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट या 28 27 अगर है तो यू विल हैव टू डिपेंड ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो फिर आपका मैट वैट कैसा गया है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा. यस यस यस, यार मैंने जेई अभी जम्मू कश्मीर का पेपर आई हैव नॉट एनालाइज्ड, राइट. सो विल बी कमिंग इन आई गेस ऑन थर्सडे और फ्राइडे विद द पेपर ऑफ जम्मू कश्मीर. तो 2 4 दिनों में आ जाऊंगा, टेंशन मत लो. ठीक. गुड स्कोर फॉर MP. फॉर मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू मी फॉर जनरल इट इज 168. ठीक है, 168 फॉर मध्य प्रदेश फॉर जनरल कास्ट. अगर ये हो तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. ठीक है, इतना ये सही है. 162 इज इट एनफ? Isha, 162 is enough in UP, right? I have just told you, if you're 160, more than 160, you are most probably going to crack NTSE. हाँ बिल्कुल, जिनको लगता है कि they have crossed it, get your answers, get the answer key from any source and please match it. ठीक है, 1 2 मार्क का फर्क होता है आंसर की में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ स्टूडेंट टुडे एंड ही आस्क्ड मी कि शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NTSE और NTSE स्टेज 2 और नॉट. एंड मैंने उसको यही सजेशन दिया कि भाई देखो, अगर तुमने पेपर एनालाइज किया है, अगर आपने आंसर की से मैच किया है, और अगर इफ यू आर गेटिंग मोर देन 160, जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NTSE स्टेज 2, राइट. इफ यू हैव नॉट, देन फिर तो भाई तुम मतलब ये मत सोचना कि भाई मैं मिलाऊंगा नहीं आंसर. ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे. भाई अगर मिला रहे हो और क्रॉस हो रहा है ना मार्क्स, पढ़ना शुरू कर दो. सिंपल. सो सिंपल टर्म्स में आई विल टेल यू कि इफ यू आर मोर देन 150 इन उत्तर प्रदेश, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NTSE फॉर द जनरल कैटेगरी. 150 के ऊपर हो, जनरल कैटेगरी के हो, NTSE स्टेज 2 के लिए पढ़ना शुरू कर दो. हाँ बच्चा, यूपी एंड 162 है ना, बताया तो. चलो, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पेपर ऑफ झारखंड. And this was the easiest paper I have ever seen, right? Easiest paper I have ever seen. इतना इजी पेपर झारखंड में मैंने नहीं देखा है पहले कभी. तो ये बहुत इजी पेपर था. Which treaty recognized Greece as the independent nation? Treaty of Constantinople in 1932. Who founded the which was the secret society found by the Giuseppe Mazzini? Young Italy, Young Europe. ठीक. ये देखो, अब देखो, ये एक वो है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एमकेटी 188. अरे बिल्कुल यार, 188 कहीं भी सिलेक्ट हो जाओगे. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज वाज फाउंडेड बाय जोसेफ मजीनी? यंग इटली एंड यंग यूरोप, बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक दैट व्हाट आंसर की इज देयर इन NTSE's पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द NTSE's पर्सपेक्टिव. तो अगर उनके हिसाब से बी है तो बी, सी है तो सी. ठीक. फिर ये 2 क्वेश्चंस थे जो कि इंडो चाइना से थे, एंड आई हैड हाईली रिकमेंडेड all those students to go and read this Indo-China chapter, though I had told them not to study the कौन सा chapter, peasants and farmers, clothing, history and cricket. ये मैंने मना किया था. And apart from these 3 chapters, I had recommended everyone to read every single chapter from your NCERT book from class 9th and 10th. Right? So those guys who have studied it, they have done wonders. जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गड़बड़ हो गए हैं. अब है The resolution of Purna Swaraj was adopted at which Congress? It was the Lahore Congress session, 1929. Great Depression started in 1928. IMF stands for International Monetary Fund. So you will not get to see anything easy than that. इतना इजी पेपर किसी ने भी नहीं सोचा था कि NTSE स्टेज 1 में झारखंड के अंदर आ सकता है. सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर NCERT book. And for this, I will say that if you are getting less than 30, if you are getting less than 30 or 35, नहीं, less than 30 नहीं, less than 33, right? If you are from Rajasthan, Jharkhand, and you are getting less than 33 marks, then bhai, you are very unlikely to crack the NTSE stage 1.
पब्लिक एग्जाम मतलब समझा नहीं मैं। ठीक है, you got 36 in Jharkhand, that is absolutely great. So if you got 36, 37, 38, 39, 40, then you have done great. But if you are have got less than 33 marks, na, it is poor, right? So I'll be very frank with you guys. मैं ऐसे मजाक मतलब झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई सही किया अच्छा किया। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पेपर लेस देन 32 इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक, तो आई होप कि आप 32 33 से नीचे नहीं हो। And the overall cutoff, according to me, in Jharkhand is around 180. ठीक है, it can be plus minus of 5, 5 plus minus हो सकता है, but mostly it can be around 180. ठीक है, that is my personal opinion. So महाराष्ट्र I'll come up with महाराष्ट्र the next day हर्षद। ठीक है, so महाराष्ट्र के लिए कल आऊंगा। यूपी 155 is a borderline. When will result come for MP? बच्चा the result will be out in around 45 to 50 days. ठीक, इतने दिन तो लगेंगे यार रिजल्ट आने में। 181 is on border। नहीं नहीं 181 में mostly you have crossed। 181 में you must have crossed it। 170 in Jharkhand Abhijit is a border। Public exam will be or not? Kasi I am not able to understand what a public exam is। होता क्या है public exam? MP OBC good score 145। 145 to 150। Unknown here 188 in MP have crossed NTSE stage 1। Go and prepare for NTSE stage 2। Don't waste your time here बच्चा। ठीक है। UP 160 it is enough। It is not enough but it is good। Means you will fall on the borderline most probably। ठीक है, मतलब borderline cross कर जाओगे। हरियाणा में ऋतिक 140 145 145 in हरियाणा। परविंदर हरियाणा 145। छत्तीसगढ़ आई विल कम टू छत्तीसगढ़ वेरी सून। धनंजय टेलीग्राम पे बात कर लेंगे इसके बारे में क्या क्या पढ़े। 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर उत्तर प्रदेश, राइट? ऋषभ आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, बताया तो। 6 to 10 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है फॉर उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड डू इट, राइट? डू इट फ्रॉम नाउ बिकॉज इन द नेक्स्ट ईयर दिस पेपर कैन बी मोर अनकन्वेंशनल। एमपी ओबीसी 169, हाँ एब्सोल्युटली फाइन। यू विल क्रॉस एनटीएस स्टेज 1 फॉर श्योर। क्या हो गया? यूएमजेई रेखा एमपी वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, सो वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट एमपी, नॉट टुडे। टुडे वी आर डिस्कसिंग 3 स्टेट्स राइट हियर। यशस्विनी आई विल टेल यू, सॉरी यशविनी, देखो बच्चों, दो स्टूडेंट्स who are from different states like who are not from यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़, I'll tell you one thing कि before coming to the session, before starting the session, we have to research a lot। ठीक है, yes you can ask me on Telegram, बिल्कुल। We have to research a lot। और उस रिसर्च करने के लिए अब अभी मैंने रिसर्च अच्छे से नहीं किया है अबाउट द कट ऑफ, राइट? एक होता है इंस्टेंट न्यूज देना, लाइक यू मस्ट हैव सीन आज तक। ठीक है, आज तक देखा होगा ना आपने। ठीक है, रिपब्लिक टीवी ये सबने देखा है। तो दे गिव इंस्टेंट न्यूज, वो आपको इंस्टेंट न्यूज देते हैं, कुछ हुआ तुरंत बता दिया। ठीक है, बट दे माइट गेट रॉन्ग इन दैट, इसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपने एनडीटीवी देखा होगा, सो दे गिव यू द एनालाइज्ड न्यूज, दे विल नॉट गिव यू अ ब्रेकिंग न्यूज, दे विल गिव यू एनालाइज्ड न्यूज आफ्टर 8 आवर्स 10 आवर्स द इंसिडेंट हैज हैपेंड, राइट? सो इसमें रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद दिस सेशन after 2 days of conduction of NTSE examination because analyzing is very important, right? Delhi expected cutoff is around 155 to 60, but I'm not 100% sure right now। कल बताऊंगा मैं उसके बारे में, परसों या कल। ठीक है, पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर लूं देन। छत्तीसगढ़ एनटीएससी स्टेज 1। सो छत्तीसगढ़ बेट 140 इज अ बॉर्डर लाइन बेटा,
right? But it is not a complete borderline. You might get crossed. क्रॉस हो सकते हो 140 पे. So now this is the paper of छत्तीसगढ़, right? तो इसको अभी हम थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर ही लेते हैं. रेखा माई, देखो, if you have got more than 180 marks in any state of India, you are going to cross NTSE stage. ठीक है, 180 से ऊपर. अननोन हियर 181 इज ऑन बॉर्डर झारखंड. भाई कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, कितनी बार बताऊं यार. Maulik, I will come up with the Maharashtra's analysis tomorrow or most probably the day after tomorrow. So I will tell you one thing, just go and subscribe the V Foundation channel. ठीक है, V Foundation channel को subscribe कर लो, because from tomorrow onwards at 8:30 p.m. all the videos will come on the it. ठीक है, my all the videos are coming on V Foundation channel from tomorrow onwards. So go and subscribe it, क्योंकि उसके ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊंगा of every state. ठीक है, whether it is Chandigarh, whether it is Assam, whether it is Karnataka, whether it is Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh. So go and subscribe this channel first. मैंने क्या बोला? If you are more than 180, MP 169, obviously done. हाँ, so ऋषभ is saying absolutely correct. Please like it. और जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, if you want the detailed analysis of videos, right? So I am coming up with like NDTV, ठीक है? So I am giving you the analyzed video of every single state, right? So this is the question paper of Chhattisgarh, and now let's talk about Chhattisgarh. So in Chhattisgarh, the paper was mostly focused on the state board, राइट. सो स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा थे इन छत्तीसगढ़ एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, राइट. एंड if I talk about the distribution, so 60%, thank you Rekha, 60% were from NCERT, sorry, 60% were from your state board. कहाँ गया? वेदांतु पे क्यों आ गए? क्योंकि वेदांतु अच्छा है, ठीक. So 60% was from the state board of Chhattisgarh and 40% was from NCERT, right? So that was the distribution of the paper of Chhattisgarh state. अब छत्तीसगढ़ के पेपर अगर आप देखोगे, सो मोस्टली फोकस्ड ऑन स्टेट बोर्ड. श्री हिंद कैनाल कहाँ पे है? ठीक है, द लीव्स ऑफ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट फॉरेस्ट आर, ये तो इजी है, चलो. रिवर विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज ऑल्सो रिटन इन ड्रेनेज चैप्टर आई गेस, राइट. उसके बाद द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, हु बैंड सती प्रथा सिस्टम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, द ग्रेटेस्ट किंग अमंग द चोलास, राइट. इबन बटूटा was the ruler of which वो. तो ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, these are the state board questions of छत्तीसगढ़. They are also mentioned in 6th to 10th NCERT, ठीक है, but in 9th 10th of छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड these chapters are there, राइट. सो दोनों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी था. 9th 10th NCERT प्लस योर छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड बुक. इफ यू हैव फॉलोड 6th to 10th NCERT also, you might answer many of the questions. ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन 47. 47 तो छत्तीसगढ़ में 47 से नंबर कहाँ है भाई? I'll come up with the solution next day. टेक्स्ट टेंशन मत लो, सॉल्यूशन के साथ मैं फुल सॉल्यूशन के साथ आऊंगा विद डिटेल्ड एनालिसिस, राइट. उसकी टेंशन मत लो ऋषभ. Bilal, Kerala expected cutoff is around 155 plus minus 5, 87. For the protection of fundamental rights, writs can be issued by Supreme Court. Judicial review can be issued by Supreme Court as well as High Court, but writs can only be issued by the Supreme Court, right? So 87th answer is B. Maulik, Maharashtra expected cutoff. I guess, yeah, I'm not 100% sure, but in my opinion, it will be around 170.
ठीक है, बट टुमारो आई कम अप विद दिस, द एग्जैक्ट वैल्यू, कल आ जाऊंगा मैं इसके साथ, टेंशन मत लो यार। डू लाइक द सेशन यार, ओनली 55 लाइक्स आर देयर। यस, यस रेखा। सो छत्तीसगढ़, I will give you the exact detail. So, what will be the expected cutoff? So, in Chhattisgarh, if you are getting more than 30 plus, na, then you are going good. Okay. Obviously, if you are getting 35 plus, then you have done extremely well. Extremely well. Okay. And in Chhattisgarh also, if you are 20, between 25 to 30, it will be fine enough. ठीक ठाक होगा, but less than 25 is unacceptable. It is unacceptable. ठीक है, तो ये हो गया मेरा भाई छत्तीसगढ़ का एनालिसिस। ओवरऑल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सो अकॉर्डिंग टू मी द ओवरऑल कट ऑफ फॉर द छत्तीसगढ़ स्टेट विल बी फॉर द जनरल कैटेगरी विल बी अराउंड 150। ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे आप जा सकते हो। ठीक है, बट मेरा जो एनालिसिस है वो अराउंड 150 टू 155 होना चाहिए। यूपी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 160। टेक्निकल कॉम। हम्म, हर्षित आई एम गिविंग यू ना कट ऑफ फॉर छत्तीसगढ़। एमपी, एमपी में हाँ 165 प्लस इज अ गुड स्कोर। Bacha, I have just scheduled this session only to let you know about the paper of three different kinds. ठीक है, it's not a solution of any paper. ठीक है, ये पूरा डिटेल्ड पेपर सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है अबाउट थ्री स्टेट्स। द उत्तर प्रदेश विच हैज अ वेरी अनकन्वेंशनल पेपर, द झारखंड विच इज फुल ऑफ एनसीईआरटी, एंड द छत्तीसगढ़ विच इज द मिक्सचर ऑफ स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी, right? So that is why this session has been scheduled in order to give you an idea. So I'll tell you one more thing: the students who belong to uh, Bihar, they will follow this process. ठीक है, so it will be a very unconventional paper. तो बिहार वाले इसको फॉलो करना, वो कभी भी इन दोनों को फॉलो मत करना, डूब जाओगे। ठीक है, तो बिहार वाले अनकन्वेंशनल पेपर की तैयारी कर लो, 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट विल बी फाइन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम राइट नाउ। 6 to 10 की एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ लो, काम चल जाएगा। थैंक यू रेखा। एमपी कट ऑफ बताया तो मेरे भाई, कितनी बार बताऊं? एमपी कट ऑफ 165। क्वेश्चन 88, ऋषभ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट सिविल कोड? एडिशनल जज कोड, नायब तहसीलदार, क्लास 3 मजिस्ट्रेट कोड, कोर्ट ऑफ मुंसिफ। नायब तहसीलदार। सर, आई हैव एनालाइज्ड यूपी पेपर मेनली फ्रॉम केरला एससीईआरटी। सिस्टम आई डिडंट गेट यू। क्या हो गया भाई? निमेश, हरियाणा कट ऑफ 145। 145 will be a good score in Haryana. अरे महक, I'm sorry, 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 I forgot your name. I'm really sorry.
एक मिनट, 88 नंबर ना, रुको 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 रुको, just give me a second, just give me a second. Which of the following is the lowest civil code? देखो पहली चीज बच्चा सुनो मेरी बात, ठीक है? क्वेश्चन इज अबाउट सिविल कोड, ठीक है? सो मुनसिफ सिर्फ सिविल कोड के डिसीजंस नहीं लेता, ठीक है? वो सिर्फ सिविल कोड्स के डिसीजन नहीं लेता। सो द करेक्ट आंसर, एक मिनट, नायब तहसीलदार, अरे रे रे रे, दिस वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। द लोएस्ट सिविल कोड इन इंडिया इज द क्लास 3 मजिस्ट्रेट कोड। जो सिविल कोड है ना, एक मिनट यार रुको, सिविल कोड means it is talking about only the cases which are related to property and all. So एक सेकंड, वह सिविल कोड एडिशनल जज तो होगा नहीं, मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नायाब तहसीलदार और कोर्ट ऑफ मुंसिफ, नायाब तहसीलदार, बी इज द करेक्ट आंसर, because munsif, magistrate and additional judge, they take the सिविल मतलब क्रिमिनल नहीं होता, क्रिमिनल इज डिफरेंट, सिविल इज डिफरेंट, ठीक है? सिविल कोड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स नहीं होते, ठीक है? टॉपर मार्क्स हरियाणा, ये क्या, ये मैं कैसे बताऊंगा? Yes, Chandigarh, 187 you will cross it up. 187 is a very good score. 187 is a very good score. Hello Rashmi, how are you? MP 178 is safe. फिर एमपी का पेपर मैंने देखा है, बट द डिटेल्ड एनालिसिस विल बी गिवन इन 2-3 days, ठीक है? सो आई एम अगेन टेलिंग यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बच्चों, वी फाउंडेशन, बिकॉज ऑन दिस वी फाउंडेशन चैनल आई विल बी कमिंग टुमारो, ठीक है? लाइव एट 8:30 PM। सो वी फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई विल बी कमिंग लाइव एवरी डे ऑन दिस चैनल एट 8:30 विथ एनालिसिस ऑफ अ सिंगल पेपर एवरी डे। सो एक एक दिन रोज एक एक पेपर के एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक? कट ऑफ बाकी सबसे कम क्यों है? देखो बाकी सबसे बहुत ज्यादा कम तो नहीं है, ठीक है? जहां मैंने, अब यूपी में अगर कोई बोलता है कि एट दिस लेवल ऑफ पेपर द कट ऑफ विल बी 180, सो इट इज इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन फोकस ऑन क्वेश्चंस, राइट? यू डोंट हैव टू फोकस ऑन पास्ट ईयर कट ऑफ्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पास्ट कट ऑफ के ऊपर ध्यान नहीं देते, ध्यान हम किस चीज के ऊपर देते हैं? द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर, right? So if I have told you that the level of questions in Jharkhand were very very easy, so 180 can be the probability, right? But the level of questions in Uttar Pradesh, 7 to 8 questions were like this कि no one would have answered, तो 7-8 नंबर तो कट ऑफ वैसे ही नीचे चला गया, ठीक है? तो हर साल से 7-8 तो वैसे ही नीचे चला गया, तो आप उस हिसाब से यू कैन डिटरमाइन दैट द कट ऑफ इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक? बट आप ऐसे नहीं बोल सकते बाई सीइंग ओनली द पास्ट ईयर। Radhya 115 SC, yes, it is good. For general 155 to 160 is good. सर आप क्या लिखा है? बहुत अच्छे हो, बाकी सब छत्तीसगढ़ का 166 बोल रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे पूछा तो बोल रहे हैं 160 प्लस वॉज टफ छत्तीसगढ़। मैंने आपको छत्तीसगढ़ का बताया ना कि मेरे अकॉर्डिंग 155 टू 160, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रॉम 166, बट या सर देखो 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, दैट माइट बी द पॉसिबिलिटी, बट अकॉर्डिंग टू मी 160 इज गुड। यूपी जनरल 160,
नो बच्चा, भाई इट इज टफ कि यू विल गेट द स्कैन ओमआर कॉपी, थोड़ा मुश्किल है। आंसर ऑफ क्वेश्चन 97 छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 19, opportunity cost of a factor is also known as, oh, it's D, none of the above, because the opportunity cost is also known as the explicit cost, ठीक है? So D will be the correct answer. प्रियंका, आप नहीं, नाम 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 बताओ यार कैसे। तो मुझे याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट 100% श्योर। अरे तो किसी बच्चे ने भेजा होगा। आलेख 160 प्लस विल बी ठीक ठाक, ठीक है? तो 160 प्लस अगर एमपी पे हो तो प्रोबेबिलिटी है कि यू विल क्रॉस इट, ठीक है? बिकॉज द पेपर ऑफ एमपी वाज नॉट वेरी वेरी इजी, ठीक है? कहीं देर इज नो डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट एवरी स्टेट सिंगल टुडे, वी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है? So the analysis will be starting from tomorrow onwards on the V Foundation channel at 8:30 p.m. ठीक है? So बच्चों, I guess that is it from this particular session of NTSE analysis, right? So in the next session, अच्छा प्रिंस, अरे सॉरी सॉरी, ओके आलेख, सो कोई स्टेट का नहीं है मेरे भाई, ठीक है? वंश पंजाब के पेपर के साथ कल आऊँ, ये दो एक दो दिन के अंदर आऊंगा, ठीक है? पंजाब का मैंने अभी एनालिसिस नहीं किया है, मैंने नहीं देखा है यार, माय रेगुलर क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन यार बच्चा, that is why I'm not able to focus 100% on your NTSE's paper, right? But yeah, I will give a complete analysis, not a ऐसे झूठा झूठा वाला एनालिसिस नहीं दूंगा मैं आपको। गुड स्वागत, गुड। लूसेंट बिल्कुल, इफ यू आर इन क्लास 9th पॉइंट बाय, इट्स ओके प्रिंस, राइट? सो बच्चों, दैट इज इट फ्रॉम दिस सेशन, एंड we'll meet tomorrow at the V Foundation channel of Vedantu. याद रखो, V Foundation channel of Vedantu at 8:30 p.m. and we will have a detailed analysis of every single state from tomorrow onwards at 8:30 p.m. एक दिन में एक पेपर होगा, ठीक है? और कल मोस्टली हम जो पेपर लेके आएंगे that will be of चंडीगढ़। And good Lakshmi, it's okay Sandeep, it's okay. This was not a very important session for you guys, मतलब अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो it will be started from tomorrow onwards, right? So बच्चों, let's conclude the session right here, and thank you very much for being in the session. I just wanted to give you a brief idea about the three different types of papers which have come in the examination. Haryana, Uttar Pradesh was a very unconventional paper. The paper of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, it were mostly based on uh, state board plus NCERT, and the paper of Jharkhand or Delhi, it was mostly based on NCERT, right? No, but I have not. I, no, 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 no dinner yet. Krushkant, 166 थोड़ा मुश्किल है. 116, sorry, 116 तो थोड़ा मुश्किल है. If you're in class 9th, go and buy your lucent book. पक्का, पक्की बात है. मेरे जैसा कोई भी टीचर नहीं. धन्यवाद. ये अच्छा था या बुरा था? चलो, अब हम मिलते हैं बच्चों अगली सेशन में, ठीक है? So I hope you some of your doubts have been, I know every doubt has not been cleared yet, क्योंकि मेरा वो पर्पस था भी नहीं इस सेशन के अंदर. So in the next session all your doubts will be cleared according to the states. तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. I will come up with a very good video. ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन था आपके लिए, right? So thank you very much बच्चों for attending the session. 175 MP तुषार 100%. You have cleared NTSE stage 1. Okay, so thank you very much guys for being in the session, and we'll meet again tomorrow at the V Foundation channel at 8:30 p.m. So till then, Kirti, UP 160, I have told you, no, 160. You can watch the recordings also. 160 will be my expected general cutoff for Uttar Pradesh. For OBC it will be around 140, 145 to 150. व्हाट्सएप रात में देखूंगा, अभी भी थोड़ा काम है, ठीक है? चलते हैं दोस्तों फिर. Bye bye everyone, and we will come up tomorrow with the detailed analysis. Tension लेने की जरूरत नहीं है. I'm not going anywhere,
NTSC has just concluded yesterday. तो अभी बहुत टाइम है आपके पास फर्स्ट स्टेज. Okay, so bye bye everyone. Thank you very much for attending the session. Thank you very 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 much, and we'll meet tomorrow. Okay, 188 cutoff is crossed. Okay, so bye bye guys. राजस्थान में हो गया तुम्हारा, पक्की बात है. पढ़ाई पे लग जाओ NTSC स्टेज के लिए. राहुल हो जाएगा NTSC स्टेज 1 188 में पक्का. ओके.